Okay दोस्तों, तो आफ्टर हाइड्रोकार्बन लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द अल्काइल हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स बेसिकली क्या होता है? वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पे हैलोजन एटम जो है वो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है। तो अगर बेंजीन रिंग के साथ यानी कोई भी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो उनको हम बोलते हैं हैलोएरिन्स। और अगर मान लो कोई भी नॉर्मल नॉन एरोमेटिक पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है वो, तो इन दैट केस उसको हम बोलते हैं हैलोएल्केन्स। तो सबसे पहले हम हैलोएल्केन्स के बारे में बात करते हैं। जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है CnH2n-1x। X जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन को हम अल्काइल फ्लोराइड, क्लोरीन को अल्काइल क्लोराइड, ब्रोमीन को अल्काइल ब्रोमाइड और आयोडीन को अल्काइल आयोडाइड बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। नाउ बेसिस ऑन द हैलोजन एटम इन द कंपाउंड, मेनली जो इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो मोनोहैलाइड, दूसरा जो है वो है डाईहैलाइड जहां पर दो हैलोजन एटम्स होंगे। अगर एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं जेम डाईहैलाइड। अगर बाजू बाजू वाले पे जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाईहैलाइड। एंड उसके बाद है ट्राईहैलाइड जहां पर तीन हैलोजन एटम्स होंगे एक में। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है RCX3। एंड उसके बाद है टेट्राहैलाइड जिसमें चार हैलोजन एटम होगा। उसके अंदर एक जो स्पेशल टाइप हम डिस्कस करेंगे वो है CX4। और इसके अलावा विसिनल वाला भी हम डिस्कस करेंगे जहां पर दोनों में दो दो होंगे। और इससे ज्यादा अगर होगा तो हम उसको पॉलीहैलाइड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले क्या है? CH3F, CH3Cl, CH3Br, ETF, ETCl are gaseous at room temperature. They are gaseous at room temperature. ठीक है। Rest up to carbon 18 are liquids at room temperature. Rest up to carbon 18 is liquid at room temperature. Heavier than that, are waxy solids. उससे ज्यादा अगर होंगे तो वो हमारे वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स boiling point and melting point of alkyl halides increases with increase in molecular weight. Okay, now for isomeric halides, boiling point and melting point जो हमारे होंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ट्रेंड क्या होगा? प्राइमरी, ग्रेटर देन secondary, greater than tertiary.
प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी, आइसोमेरिक हैलाइड्स के लिए ये ट्रेंड जो है वो हमारा फॉलो होने वाला है। ठीक है, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Ri is greater than Rbr is greater than RCl is greater than Rf। क्लियर? मॉलिक्यूलर वेट के कारण है बेसिकली ये। अल्काइल आयोडाइड का वजन जो है वो हमारा सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड एंड देन अल्काइल फ्लोराइड। नेक्स्ट, alkyl fluorides and chlorides are less dense than water। पानी से कम डेंस है। अल्काइल ब्रोमाइड and iodide are more dense than water। Alkyl fluorides and chlorides are less dense than water and alkyl bromide and iodide are more dense than water। ठीक है, इसके अंदर एक चीज याद रखना है, जो CH2I2 है is the second most dense liquid after mercury। After mercury, that is the second most dense liquid। ठीक है, ओके। नाउ फोर्थ, alkyl halides are insoluble in water। Alkyl halides are insoluble in water, but soluble in organic solvents। They are soluble in organic solvents। ठीक है, okay। Now after that, they give green-edged flame with the copper wire। They give green-edged flame with copper wire। ठीक है, नाउ इसके अलावा क्या है? क्लोरोफॉर्म slowly decompose chloroform slowly decompose in presence of air and sunlight। Chloroform slowly decompose in the presence of air and sunlight। ठीक है, अच्छा, and इस कारण पे they have to be it has to be stored
with a little amount of alcohol. ओके, थोड़ा बहुत अल्कोहल डाल के क्लोरोफॉर्म को हम स्टोर करते हैं. अल्कोहल जो है वो हमारा क्लोरोफॉर्म का डिकम्पोजिशन को हिंडर करता है. इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे. नाउ इसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड टर्न्स violet oblique brown in presence of sunlight. In presence of sunlight, alkyl bromide and iodide turns violet oblique brown. क्यों? जो अगर मान लो तुम्हारे पास है Ri, तो 2 times Ri in presence of sunlight splits into Rr plus I2. ये हमें ब्राउन या वायलेट कलरेशन जो है वो हमारा देता है. क्लियर? Okay, next. Alkyl halides are toxic in nature and when inhaled in large amount produce unconsciousness. When inhaled in large amount produce unconsciousness. ठीक है. Okay. Then जो अगर मैं पोलैरिटी के बारे में बात करूं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग RF greater than RCl not to be confused with dipole moment. In case of dipole moment, Ri RF. ठीक है. सॉरी, अरविंद जी ये वाला पॉइंट की बात काट देना. Okay, not to be confused with dipole moment. Dipole moment में क्या होता है? क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का लेंथ भी ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू द डिस्टेंस. तो जो डाइपोल मोमेंट का जेनरिक ट्रेंड होता है वो होता है RCl ग्रेटर देन RF ग्रेटर देन RBr greater than Ri. Okay. Last point. Alkyl fluorides are thermally unstable and hence cannot be
distilled as heating produces a molecule of HF. As heating produces a molecule of HF. अल्काइल हैलाइड के साथ ये वाली प्रॉब्लम है. अल्काइल क्लोराइड्स एक्सेप्ट हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला आर thermally stable and can be distilled pretty easily. So ये सारे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें याद रखने की जरूरत है. क्वेश्चन आ सकता है कभी भी इस फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इसको लेके आगे और बहुत ज्यादा डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है. प्रिपरेशन हम लोग नहीं करते हैं, वो मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि इसका प्रिपरेशन कोई ना कोई और एक जगह का रिएक्शन है. तो अब हम लोग सीधा जो है वो हम जाएंगे इसके केमिकल रिएक्शंस पे. लेट्स सी.